Hi everyone, my name is Chandran and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से 5-6 दिनों से अराउंड वीडियोस नहीं आ रहे थे। There has been some familial issues that I have been undergoing and that's why these videos are not continuous, but I'll try to make it continuous. I cannot guarantee that it will be continuous like for next even 2 or 3 days, but after 2 or 3 days when things are stable I'll try कि वीडियोस फिर से जैसे कंटिन्यूस फॉर्म में पहले दी जा रही थी, आप लोगों को सप्लाई की जा रही थी, उसी तरीके से वीडियोस फिर से स्टार्ट की जाएं। So in that series where we already have completed almost 59 videos in which every video was containing like 20 questions, so by that logic we have already completed 1180 questions. Now we are directly jumping to the, in that continuation we are directly jumping to the first question of the day, and that is going to be 1181. Okay, which of the following parliamentary committee does not have representation of Rajya Sabha? राज्य सभा के मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट आउट ऑफ दीज 4 गिवन कमिटीज किस किस कमेटी में नहीं है? सो कमेटी ऑन एस्टिमेट में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वहाँ राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रूल्स कमेटी, committee on privileges and committee, so all these 3 committee that you can see 2 3 4 right here, Rajya Sabha does have representation. So does not पूछा है, does not have representation, so only one will be the answer and only one is there into the B, and hence B is going to be the right answer. Second question, which of the following provision into the constitution can be amended by a simple majority of 2 houses of the parliament? So आप सभी को पता होगा कि many a provision can be amended by special majority, some provision with special majority plus involvement of the states, and there are some provision that can be amended by simple majority. So it has asked कि out of given 4 provisions which all can be amended by ordinary majority, right? Simple majority. Any of the list 7th schedule का अगर change करना है, so this will require स्पेशल मेजोरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स 4th शेड्यूल को अमेंड करना, अगेन स्पेशल मेजोरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सो ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत सिंपल है, ये भी ऑर्डिनरी मेजोरिटी से किया जा सकता है। करेक्ट बताना है, सो 3 and 4 आर गोइंग टू बी करेक्ट, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एसएससी टाइप का क्वेश्चन है, लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड इज 245, no, it is 250. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, this becomes incorrect. The 3rd schedule of the constitution deals with allocation of seats into the Rajya Sabha. No, it is the 4th schedule that deals with allocation of seats into the Rajya Sabha or representation of states into the parliament और लोकसभा। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। यूनियन टेरिटरीज से जो है, ठीक है, किस तरह से, वैसे स्टेट से वगैरह, स्टेट जहाँ के लेजिस्लेचर होता है, एमएलएज होते हैं, वहाँ तो एमएलएज वगैरह चुनते हैं, बट यूनियन टेरिटरी में कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा? सो एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू। सो ओनली करेक्ट पूछा है, only 3rd statement is going to be correct. Consider the following statement about territorial constituencies. Okay, correct statement हमें बताना है, each state is allotted a number of seats into the Lok Sabha in such a manner that ratio between the number its population is same for all 28 states into the India. That is incorrect. मोस्ट ऑफ स्टेट में जो लोकसभा का जो सीट है और पॉपुलेशन का रेशियो है वो सेम रहता है, बट देर आर सर्टन स्टेट्स विच डज हैव पॉपुलेशन बिलो 60 लाख, सो वहाँ ये लॉजिक, पॉपुलेशन वाला जो लॉजिक है वो नहीं लगाया जाता। ठीक है, वहाँ एक लमसम लोकसभा की सीटें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए दे दी जाती है स्टेट को, उन स्टेट्स में जहाँ 60 लाख से 6 मिलियन से नीचे वहाँ। सो दिस इज इनकरेक्ट। ईच स्टेट इज divided into the territorial constituency in such a manner that ratio between population of each constituency and number of seats allotted remains throughout the, so that is correct. Second only, that is B is going to be the right answer. Consider the following statement about removal process of Speaker of the Lok Sabha. Speaker is removed by a resolution passed by majority of all the members of the Lok Sabha. Such a resolution can be moved only after giving 14 days notice
That's correct. When a resolution for the removal of the speaker is considered by the house, he cannot preside at the sitting of the house, though he may remain present into the house. So that is also correct. Speaker can speak and take part into the proceeding of the house at such a time, but he cannot vote into the first instance, but he can vote into the in matters when equality of votes is there. So that's incorrect. Equality of vote के केस में वो वोट नहीं कर सकते, बट जबकि फर्स्ट इंस्टेंस में ही कैन वोट. सो करेक्ट पूछा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली आर गोइंग टू बी करेक्ट एंड हेंस B is going to be the right answer. Consider the following statement about financial emergency, that is article 360, right? Correct statement we have to tell. Okay, the proclamation during financial emergency must be approved by the parliament within 1 month from the date of issue. Not within 1 month, 2 months are given but to the parliament to approve such an emergency under article 360. Okay, if approved by the parliament, the proclamation remains valid for 6 months at a time. No, it remains applicable or it remains in force for unlimited times, right? कोई time limit नहीं है. So this is also incorrect. The financial emergency has never been proclaimed in India so far. So that is the only statement that is correct. Correct बताना है. So 3 only is going to be correct and hence D is going to be the right answer. Consider the following statement about writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. Writ jurisdiction of Supreme Court, Article 32, and writ jurisdiction of High Court, Article 2. These are some important articles, और इन्हीं articles को अगर Indian polity के see out of 365 plus article that you have in your constitution, there are around 50 plus article, 50 to 70 article that every Indian polity student must remember. ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स है जो आपको याद रखने चाहिए. चैप्टर वाइज जो इंडियन पॉलिटी का हम लोगों ने क्लास लिया हुआ है, ठीक है, उस सभी चैप्टर्स के एंड में हम लोगों ने एक स्लाइड डेडिकेट की इस चैप्टर से, जो अगर कोई आर्टिकल है जो कि आप लोगों को नेसेसरली याद रखनी है ना. अगर आप 100 के करीब आर्टिकल्स इफ यू कैन रिमेंबर, दैट इज मोर देन एनफ. ठीक है, वो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंसिया की कैटेगरी में डाल देती है, बट 50 to 70 प्लस 50 प्लस अराउंड 70 प्लस आर्टिकल इज गोइंग टू बी समवेयर सेफर. ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 226 is not exclusive but with concurrent with the jurisdiction of Supreme Court. So that is correct है ना. The Supreme Court and High Court can issue writs only for the enforcement of fundamental right and not for other. That's incorrect. Supreme Court के रिगार्डिंग तो ये स्टेटमेंट सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स का एनफोर्समेंट और रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. बट व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट अलोंग विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अदर राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट्स को इशू कर सकते. द रिट जुरिस्डिक्शन of High Court is wider than that of the Supreme Court. So that is correct because High Court other rights के enforcement के लिए भी कर सकती है. So 1 and 3 is going to be correct statement and hence A is going to be the right answer. Consider the following statement about territorial jurisdiction of Parliament. Okay, and correct statement बताना है. The Parliament can make extraterritorial legislation. Thus the law of parliament is also applicable to Indian citizen and their property in any part of the world. That's correct. The president can make regulation for the peace and progress and good governance for all union, not all union territories. President can make such regulation only for 4 union territories. अब कौन कौन से 4 union territories है, you have to tell me. So second is incorrect. If second is incorrect, this can't be answer, this can't be answer, either this or this, right? So first statement correct हो गया. Let us examine the third. The president is empowered to direct that any act of parliament does not apply to the schedule. That's incorrect again. It is the governor who is empowered to direct that an act of parliament does not apply to the scheduled area or apply with certain modifications. So third is also correct, second incorrect, second is also incorrect, so only one is going to be the right answer, that is B. Consider the following statement with respect to concurrent list. Okay, where there is a conflict between concurrent list and state list, it is the concurrent list that should prevail. That's correct. In case of conflict between central law and state law on a subject enumerated into the concurrent list, the central law
prevail over the state law, that is also correct. If the state law has been reserved for the consideration of the president and it has received his assent, then the state law shall prevail in that state over the central, over the concurrent law as well. So that is also करेक्ट है ना. सो तीनों करेक्ट हो गए हैं एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस. एंड ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली व्हेन बोथ हाउसेस are not in session. Not both the houses, even if one house is not in session, ordinance can be issued. This is incorrect. It can be issued to amend the constitution, that is also incorrect. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया जा सकता. एंड ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट. दैट इज करेक्ट. ठीक है, करेक्ट बताना है. सो 3 ओनली इज गोइंग टू बी करेक्ट. हेंस बी इज द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल. आर्टिकल 263. It was established on the recommendation of Singhvi Commission. No, it was established on the recommendation of famous Sarkaria Commission, right? So this is incorrect. Home Minister is the chairman? No, bhai. Prime Minister actually, political head and the head of government, central government is going to head this such an council. It is a constitutional body. That's correct, है ना? So only again third statement is going to be correct and hence C is going to be the right answer. Consider the following statement about censor motion. It need not to state the reasons. No, it needs to state actually. no confidence motion जो कि क्लियरली पता है पर्पस, वो रीजन नहीं स्टेट करना चाहिए. बट एज फार एज सेंसर मोशन इज कंसर्न, सेंसर मोशन नीड टू क्लियरली स्पेल आउट द रीजन. इफ एनी मेंबर और एनी ग्रुप ऑफ member of parliament is moving such a motion, right, he or that group needs to clearly spell out ki what is the purpose, whether they want to censor any particular minister or group of ministers. So that is incorrect. It can be moved against individual minister or group of minister or the entire council of ministers. So that is correct. So only correct पूछा है, only second statement is going to be correct and hence B is the right answer. Consider the following statement about short duration discussion or short duration motion. Okay, it is also known as 2 hour discussion, as time allotted for such a discussion should not exceed 2 hours. So that is correct. The device has been in existence in India since Republic. So that is incorrect. Actually ये device जो है 1957 में evolve किया गया था. So this is incorrect. First statement only is going to be correct, right? A is going to be the right answer. Match the following pairs. Okay, कुछ constitution दिए गए हैं, कुछ features दिए गए हैं और हमें match करना है. रूल ऑफ लॉ मच फेमस. रूल ऑफ लॉ आपका कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, सो ये यहाँ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PBL. ठीक है, आर्टिकल 31 उनका जो है उनसे हमने लिया है. सो फर्स्ट का D, थर्ड का B, सेकेंड इज व्हाट? थर्ड का B, राइट? थर्ड का भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स. 2 का C एंड 4th का आपका जो हो जाएगा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, 4th का A, राइट? सो B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 1D, 2C, 3B एंड 4th का A. B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इस पेयर को थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल बिल ऑफ सेकेंड टाइप, फाइनेंशियल बिल 2, राइट? आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल बिल की क्लासिफिकेशन. द फाइनेंशियल बिल 2 कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इनटू द. सो ये फाइनेंशियल बिल का एक्चुअली डेफिनेशन है. सो दिस इज करेक्ट. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इनटू द लोकसभा. दैट्स इनकरेक्ट. फाइनेंशियल बिल को एक्चुअली ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल 2 को एक्चुअली ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है. सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द राज्यसभा एज वेल, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकसभा as well. ठीक है, so all of above can't be answer, this can't be answer, this can't be answer because second is incorrect. हमें correct बताना है. So by elimination we have been able, हमें third statement पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. By elimination we have been able to reach out to answer, that is C is going to be the right answer. Consider the following statement about joint sitting of the parliament. Joint sitting, article 108. Okay, joint sitting is applicable to ordinary bill, financial bill and the constitutional amendment. No, joint sitting is available only in case of what you call ordinary bill only. So this becomes incorrect. हमें correct बताना है. So this can't be answer, this can't be answer, this can't, because one can't be part of answer. हमें correct
correct बताना है, but this one becomes incorrect and hence again by elimination we have been able to reach to the answer, that is C 2 and 3, third statement. Make sure that you are whenever I am speaking, whenever I am skipping any kind of answer, make sure कि आप लोग उस स्टेटमेंट को भी पढ़ते हो, है ना. पॉज कर लिया करो वीडियो एंड उस स्टेटमेंट को भी पढ़ा करो आप लोग, है ना. एक एडिशनल लर्निंग मिलेगी. इट इज जस्ट ये ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, ठीक है. वीडियो की लेंथ मैं नहीं बढ़ाना चाहता एंड दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी स्किम कर देता हूँ. बट मेक श्योर कि भाई इवन इफ आई हैव skipped two provision just due to elimination, make sure you read this, ठीक है. Which of the following are credited to the public accounts of India? Provident PF का डिपॉजिट, यस, पैक में जाता, पब्लिक अकाउंट्स का पब्लिक अकाउंट्स में जाता है. जुडिशियल डिपॉजिट्स, यस, ये भी जाता है. डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, यस, ये भी पब्लिक अकाउंट्स में जाता है. रेमिटेंसेस, yes, this is also part of your public account. So all of the above is actually part of public accounts. Consider the following statement on Bill of Rights, that is fundamental rights, with reference to the Constitution. It prohibits government from acting against right of individual. That is correct. It ensures remedy in case of there is violation of their rights. So that is also correct. Correct बताना है. Both 1 and 2 is going to be the correct statement. Consider the following statement about pardoning power of the president and governor. Okay, the president can pardon death sentence while governor cannot. That is correct. ठीक है. That is the difference between the pardoning power of president and governor. Both president and governor cannot pardon sentences inflicted by the court martial or military court. That is incorrect. गवर्नर नहीं कर सकते, जो कोर्ट मार्शल के डिसीजन है उनको पार्डन, बट प्रेसिडेंट कैन डू. प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डू सो. करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव टू टेल. सो ओनली वंस, that is the first statement is correct and hence A is going to be the right answer. So with this we are completing another milestone. We are completing around 1200 of the question of promise 2000 question. Very soon we'll be completing another 800 question as well. So until we come up with the next video, till then, bye bye.